enforceable at the option of one party. They are considered as voidable contracts. When it is enforceable by or at the option of both the parties, that is enforceable by law, that known as valid contracts. What is contingent contract? Basically, they are something similar as voidable contracts. They have fate similar like voidable contract. That means these contracts may turn into valid or may turn into void. Same like voidable contract which may turn into valid or void. They may also turn into valid and void. But where is the difference? Where is the difference? Basically, these contracts are voidable. These contracts are voidable at the option of parties. Whereas they become valid or void upon happening or non-happening of events. Happening or non-happening of events. So this is the difference. In voidable contract, basically it is the will of the parties, whether they want to resign the contract or not. Whereas in contingent contract, basically parties make contract in such a way that their happening or non-happening depends upon certain event. So let us read contingent contract first definition and find out, okay, what is the real difference or where the concept lies. Section 31. This is a contingent contract is a contract. Okay, contingent contract is a contract. So what is basically they are saying? This is something which is valid. So contingent contracts are generally valid, enforceable by law. तो जब से इनको फ्रेम किया गया तब से ही एनफोर्सेबल है, ठीक है, दे आर एनफोर्सेबल, बट इनकी जो एनफोर्सेबिलिटी है ये किसी पर डिपेंडेंट है. दिस इज contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. So this is these contingent contract which are enforceable, their enforceability, or I say their happening or non-happening depends upon some collateral event. So basically they depend to whether they are enforceable or not. So they are contract, but whether they will get enforceable or not, or when they will get enforceable or not, कब उनको enforce किया जाएगा और कैसे enforce किया जाएगा, ये किस पर डिपेंड करता है. ये collateral event है, parallel event एक, so there is a parallel event. Collateral events mean parallel event. उस पर डिपेंड करता है. For example, A says, I will give my watch to you on the day when ship arrives. बताइए, this is what? This is contingent contract. This is contingent contract. ऐसा कुछ कहीं और भी पड़ा है? ऐसा कुछ कहीं और भी पड़ा है? Wagering agreement जैसा तो नहीं लग रहा है किसी को ये? Something like wager. Because देखिए contingent contract और wagering contract में difference समझ लीजिएगा पहले.
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेजर जो होते हैं वो वेजर एग्रीमेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे, तो बेसिकली दिखने में तो अच्छे लगते हैं बट इनका डिफरेंस समझते हैं लोग, पीपल आर कंफ्यूज। बहुत बेसिक डिफरेंस है वेजरिंग में। पहला डिफरेंस ऑब्वियसली नो, दिस इज एग्रीमेंट एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। सबसे पहला डिफरेंस है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो है वो एग्रीमेंट्स है, दे नेवर टर्न इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वेयर दीज आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वॉइड एब इनिशियो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, है ना, दे आर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जिस दिन से बनते हैं उस दिन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। These cannot be enforced. These cannot be enforced. इनको enforce भी नहीं कर सकते, और इनको it can be, it cannot be enforced. It can be or may not be, may not be enforced. ठीक है, ये तो कुछ खास बात है। खास पहचान कैसे होगी आपको कि बेसिकली होता क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट्स में, क्या खासियत होती है। मेन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है। मेन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अनसर्टेनिटी होती है। अगर आज बारिश हुई तो मैं तुमको पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ही बारिश पे हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अनसर्टेनिटी। मेन कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट अनसर्टेनिटी। तो एग्जाम्पल, if it rains, I will give you 1,000 or else you give 1,000. What is the main contract? Rain is the main contract, है ना? Rain is the main contract. बारिश सब कुछ है, तो uncertainty is the main event. जब uncertainty main event होता है तो wager agreement होता है। uncertainty जो है वो main event है, तब क्या है, तब ये agreement से। whereas contingent में क्या होता है, contingent में uncertainty is collateral. Uncertainty is collateral. That is main contract. Main contract is something else. This main contract is something else. Who's happening जो है वो, या नॉन हैपनिंग जो है, नॉन हैपनिंग जो है वो क्या पे डिपेंड करती है, वो एक कोलेटरल इवेंट पर डिपेंड करती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, जब अनसर्टेनिटी ही मेन पर्पस हो कॉन्ट्रैक्ट का तो वो मेजर है एग्रीमेंट का। वेयर एज अगर अनसर्टेनिटी मेन कॉज नहीं है, तो फॉर एग्जांपल I gave you watch, I gave you money when ship arrives. So what is the main contract? Giving money dependent upon the arrival of ship. Dependent on the arrival of ship. So this is the basic difference of contingent contracts और wagering contract. ठीक है, चलिए अब विद दिस माइंडसेट से एक बार सेक्शन 31 राइट करते हैं और सेक्शन 31 में देखते हैं कि व्हाट दे आर टेलिंग अस। दिस इज contingent contract is a contract to do or not to do something. So basically this is
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप हो सकते हैं. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप. टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. ये तो हमको बताइए. कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्ट और ओमिशन. टू डू समथिंग बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट एक्ट, जो हमने सेक्शन 2H में पढ़ा था. रीड विद 2H, रिमेंबर व्हेन एक्ट टू डू, और है ना. तो व्हाट इज proposal? When one person signifies his willingness to do or abstain from doing anything. तो हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, एक्ट और abstinence. तो यही तो है वो. तो contingent contract is to do something, or not to do something is to abstain. Abstain to do something. So this is nothing new. So same like contract also, same like contingent contract. So because contingent contracts are contracts, and therefore they can be of positive nature, where a person have to perform certain thing. They can be of negative nature. वो नेगेटिव नेचर के भी हो सकते हैं, जहाँ पे किसी इंडिविजुअल को कुछ करने से रोका गया है. एग्जाम्पल, यू विल टीच at Zia Judicial and nowhere else. This is valid. You will teach at Zia Judicial is what? To do something. Nowhere else is what? Not to do something. Obviously, they can be to do something or not to do something. Doesn't matter. This doing or this not doing is depend upon a collateral event. तो basically contingent contract में हमको ये नहीं पढ़ना है कि what is contingent contract. Contingent contract तो हम समझ गए, it's a contract only. What is important is this happening, this doing or not doing of contingent contract depends upon an event. This is to do or not to do something depends upon collateral. तो एक collateral event है, उस पर डिपेंड. कैसे? This is if such event collateral to such contract does or does not have. तो बेसिकली कहते हैं इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी डिपेंड करेगी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलैटरल. हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलैटरल. तो बेसिकली दिस इज कंटिंजेंसी कैन बी ऑफ टू टाइप. ठीक है, this is contingency can be of two type. First, happening of collateral event और non happening of collateral. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करते हैं किसी इवेंट के होने पर या किसी इवेंट के ना होने पर. ठीक है, तो वो कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली आवर फोकस ऑफ स्टडी इज दैट contingency can be of two type. Contingency of event which makes the contract में दो तरीके की हो सकती है. हैपनिंग, बड़ा सा चार्ट बनाइएगा प्लीज. अरे बता रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि सब बता रहा हूँ. थोड़ा सा बड़ा स्पेस में बनाइएगा. हैपनिंग इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट. दो बातों पर डिपेंड करता है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे और नॉन हैपनिंग. दिस हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो सेक्शन 31 हमको बोलता है, सेक्शन 31 हमको डिफाइन करता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक इवेंट है जो कंटिजेंसी के फॉर्म में, जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट को डिपेंड करता है. और वो फर्दर डिवाइड करते हैं, दिस हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट कैन बी ऑफ टू टाइप.
ये भी 2 टाइप की हो सकती है. फर्स्ट, where time fixed for happening of event. जहां पे इवेंट के होने के लिए टाइम फिक्स किया गया. और सेकंड, where time not fixed for happening of event. जहां पर टाइम फिक्स नहीं किया गया इवेंट के हappening के लिए. सिमिलरली नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट भी 2 तरीके से हो सकती है. where time fixed for non happening. or where time not fixed for non happening. राइट, इस तरीके से हो सकता है. तो बोलते हैं कंटिजेंसी डिपेंड करेगी हैपनिंग पे और नॉन हैपनिंग पे. और ये हैपनिंग ऑफ द इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, किसी चीज का होना या ना होना पार्टी फिक्स भी कर सकती है, वो फिक्स नहीं भी कर सकती. मैं सारा बेयर एक्ट बात को रीड करूंगा, मैं सिर्फ आपको उसको सम अप करूंगा. बेयर एक्ट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर क्योंकि इजी सा है कुछ ऐसा. वेयर टाइम इज फिक्स्ड फॉर हैपनिंग, मुझे बेटा समझ में आ रहा है ना. वेयर टाइम इज फिक्स फॉर हैपनिंग, जहां पर समय पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि यस दिस इज द टाइम ऑफ हैपनिंग, जहां पे इवेंट का टाइम फिक्स किया हुआ है, वहां पे क्या क्या सिचुएशंस रेज हो सकती है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट सिचुएशन, वेयर इवेंट does not happen in fixed time. तो फिक्स किया हुआ था टाइम और उस फिक्स टाइम में इवेंट नहीं हुआ, तो पार्टीज हैव फिक्स्ड दैट अगर ऐसा होगा, इस समय में ऐसा होगा, तब हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, अदरवाइज मानेंगे. तो फॉर एग्जांपल दिस इज, इफ शिप अराइव्स ऑन मंडे आई विल गिव यू माय वॉच. अगर शिप मंडे को अराइव होगा तब मैं अपनी घड़ी दूंगा. दैट इज व्हाट they have fixed the happening of contingency. That is what it should arrive on Monday. Suppose ship does not arrive on Monday, what is the consequence? What will happen? Contract will become void. Contract became void. Contract क्या हो जाएगा? Void हो जाएगा. Similarly, second situation, if contract happens within a fixed time, अगर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम में हैपन हो गया, तो जो टाइम उन्होंने फिक्स किया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज enforceable. Now it becomes enforceable. Okay. This is the first situation. Second situations, तो कहते हैं अगर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे है और इवेंट की हैपनिंग का समय तय कर दिया है पार्टीज ने, तो उस समय के अंदर अगर होगा तो इन्फोर्सेबल है, उस समय के बाद अगर होगा तो फिर वो इन्फोर्सेबल है, उस समय के बियॉन्ड इट इज नॉट इन्फोर्सेबल. इज इट क्लियर ऑन दिस पर्सपेक्टिव प्लीज? Clear or not? Second situation क्या होता है? Second situation, this is where
टाइम इज नॉट फिक्स्ड, पार्टी ने टाइम फिक्स नहीं किया है इवेंट हैपन का। तो इनमें क्या होगा? फर्स्ट, इवेंट हैपन इन रीजनेबल टाइम। इवेंट रीजनेबल टाइम में हो गया, इट इज व्हाट एनफोर्सिबल, इट इज एनफोर्सिबल। अगर इवेंट रीजनेबल टाइम में हो गया, इट इज एनफोर्सिबल। सपोज सेकंड सिचुएशन, event became impossible। इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, इवेंट होगा ही नहीं। तो टाइम फिक्स किया नहीं है और अब इवेंट क्या हो गया? इवेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल। दिस इज व्हाट दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम void, void contract। थर्ड सिचुएशन, if event does not occur in reasonable time, अगर वो रीजनेबल टाइम में हुआ ही नहीं, then obviously it will become void। तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट दो पार्ट में डिवाइड किया, वेयर टाइम इज फिक्स्ड, वेयर टाइम इज नॉट फिक्स्ड। जहां समय को फिक्स किया गया हो या जहां समय को फिक्स नहीं। इन सबको पढ़ेंगे, दीज आर गिवन अंडर सेक्शंस। तो एक सेक्शन 35, 32, 33 हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं ब्रीफ आउट कर रहा हूँ ताकि आप समझें, सिर्फ क्योंकि मुझे उसका इसको रीडिंग है। सिमिलरली शिवम बेटा आ रहा है समझना, रेशमा एंड शिवम बेटा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? Let us pick up the another situation. This one. इसको काट के बड़ा कर दूंगा यहाँ पे। So let us pick up this situation where event depend upon the non-happening। मैंने बोला था पहले, एक बड़ा अच्छा उन्होंने है, बोल दो ना पहले, तो मैं बोलना बताया where the time fixed for non-happening of the event। जब not happening of the event की बात करिए, इवेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो if it does not rain or they have fixed when till when you are doing this। तब कहते हैं जहां पे टाइम फिक्स कर दिया एंड इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, देयर कैन बी सिचुएशन नॉट हैपनिंग इन गिवन टाइम। तो इवेंट उस गिवन टाइम में नहीं हुआ, क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम गलतियां करते हैं। ये बिकम एनफोर्सिबल बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन नॉन हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर उस समय में नहीं हुआ, वन सेकंड, इट हैपेंस इन अ गिवन टाइम, happen in given time, it is what void। Third, where happening of such event become impossible। where happening became, जहाँ पे happening क्या हुआ, it has become impossible। Contract is contract क्या हो गया? void। sorry, non happening को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो this will become impossible, it become impossible, sorry, because we are working on non happening ना। तो when happening become impossible, तो obviously non happen हो गया, so it will now be enforceable। Next, time is not fixed। तो नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट में टाइम फिक्स नहीं किया,
नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे डिपेंड करता है और टाइम को फिक्स नहीं किया गया, तब क्या क्या सिचुएशन है। फर्स्ट, इफ हैपेंस इन रीजनेबल टाइम, कंडीशन इज देयर। अगर रीजनेबल टाइम में हो गया तो कंडीशन इज अवॉइड। सेकंड, if happening of event became impossible, obviously happening of the event become impossible and forcefully. Third, event does not happen in a reasonable time. Event reasonable time में नहीं, condition and force. Basically सेक्शन 32 से लेकर 35 तक ये सारा कुछ दे रखा है। हम पढ़ेंगे अभी when we read सेक्शन 31 से लेकर 35, तो हम ये सारा पढ़ेंगे जो हमने अभी चाहते हैं। तो कॉन्टिजेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया, हैपनिंग ऑफ द इवेंट, नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। और हैपनिंग ऑफ द इवेंट को दो टाइम पार्ट में डिवाइड किया है, हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, हैपनिंग नॉट विद इन अ फिक्स टाइम। तो टाइम इज फिक्स्ड एंड टाइम इज नॉट फिक्स्ड। सिमिलरली नॉन हैपनिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, वेयर नॉन हैपनिंग इज टू बी हैपन इन अ फिक्स टाइम और वेयर द टाइम इज नॉट बीइंग फिक्स्ड। और फिर उसको उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, तो हमने चार्ट लेट अस रीड सेक्शन 32 1 से लेकर 35 तक वन बाय वन फाइंड आउट। क्या नहीं समझा रहा उसको, क्या समझ रहा है उसका, क्या कुछ समझ देखिए। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है ना, इसलिए बेटा कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए तुमको लग रहा होगा कि मैं फास्ट चला गया, बट दिस इज नॉट कंसेप्ट, हमको याद करना है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चार्ट आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा, तो मैं रीड करूंगा तो आपको चार्ट भी खुद को समझ में आने लगेगा। तो लेट अस रीड सेक्शन 32 में पहले रीड करेंगे एंड फाइंड आउट ठीक है। दिस इज contingent contract to do or not to do anything in an uncertain future event happen, cannot be enforced by law unless and until it has happened, or if the event become impossible but contracts become void. What they are saying, so their first thing is section 32 says happening of the event. So contract depends upon happening of the event. तो बोलते हैं क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काय पर डिपेंड कर रहा है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अब समझ के देखना, हैपनिंग ऑफ द इवेंट में सिंपल 32 इज अ सिंपल थिंग। अगर कोई चीज हैपनिंग ऑफ द इवेंट में हो रही है तो वो कब फोर्स में आएगी, इफ इवेंट हैपन। अगर इवेंट हो गया तो ये क्या होगी, इट विल बी एनफोर्सेबल, है ना। और इफ इवेंट फेल्स, इफ इवेंट फेल्स और इम्पॉसिबल, अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया या फेल हो गया ये क्या हो जाएगी, इट विल बी void, will turn into void contract, it will be enforceable contract. Simple. Section 32. तो happening we know collateral event, जो collateral event है उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका illustration हम पढ़ेंगे ध्यान से। What this is, A makes a contract, illustration A read कर रहा हूँ। A makes a contract with B to buy B's horse. If A survives C, the contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A lifetime. What is this? बोलते हैं मैं तुमको घोड़ा बेच दूंगा अगर, क्या हो गया, इफ ए सर्वाइव सी, यानी कि सी ए से पहले मर गया,
विल डिपेंड अपॉन द डेथ ऑफ द सी। तो मैं अपना घोड़ा तुमको कब दूंगा अगर सी मर जाएगा तब, तो कब तक नहीं दे सकते, तो सी मर जाता है ना, इट विल नॉट बी गिवन टिल सी डाइज। तो जब तक नहीं दिया जाएगा घोड़ा तो सी मर नहीं जाता। इज इट क्लियर? तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट है। एक और इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, बी सी पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सी पढ़ते हैं। A contract to pay B sum of money when B marries C। तो A ने कहा मैं तुमको पैसे दूंगा अगर तुम शादी कर लोगे। C dies without married to B। C बिना शादी करे मर गया। कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है? नहीं है, void because it is impossible। भाई A ने बोला B से, क्या बोला, I will give 10,000 to you as gift if you marry C। अब समझ लेना, मतलब तो सी से शादी कोलेटरल इवेंट है जिसपे उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, हाँ है ना। तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट है। अब ये इवेंट कब कैसे कैसे काम करेगा, इफ बी मैरिज सी, अगर बी ने शादी कर ली सी से तब क्या होगा, 10,000 टू बी गिवन, है ना, am I right? Suppose B dies or not, let it be C dies, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो B का है ना। C dies, C मर गए विदाउट मैरिज, बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू मैरिज नाउ, अब सी से शादी हो सकती है। कोलेटरल इवेंट बिकम इम्पॉसिबल और नॉट, हैपनिंग ऑफ द कोलेटरल इवेंट बिकम इम्पॉसिबल और नॉट। पूजा हाँ है ना, पूजा क्लियर है ये बात, सेफ सेफ क्लियर है कि व्हाट, मैरिज बिकम इम्पॉसिबल। अब मैरिज कैसी होगी, अभी इम्पॉसिबल होगी, तो अब ये क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कोलेटरल इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। तो कोलेटरल इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। नहीं समझना है शिवाजी, नहीं आया समझना, ओके, इसको नहीं आया समझ प्लीज। राहुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट 33, सेक्शन 33। Section 33 says enforcement of contract on event known happening. अब they are talking about contract depends upon non-happening of event. Now it is about that something should not happen. तो कोलेटरल इवेंट जो है वो नॉन हैपनिंग है। तो नाउ इट्स अ नॉन हैपनिंग कोलेटरल इवेंट। तो कोलेटरल इवेंट जो है वो नॉन हैपनिंग नेचर का। अब क्या होगा, दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। ये हमको पढ़ चुके हैं, हमको नहीं पढ़ना है इसको। इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, अब काय की बात कर रहे हैं यार, कोलेटरल अनसर्टेन इवेंट है जो नहीं होना चाहिए, कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। तो कह रहे हैं यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट, इवेंट हैपनिंग बिकेम इम्पॉसिबल। तो
इवेंट का होना क्या बन गया, इम्पॉसिबल बन गया। तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, दिस इज एनफोर्सेबल। व्हाई एनफोर्सेबल? बिकॉज नॉन हैपनिंग ही तो इम्पोर्टेंट है, इवेंट का ना होना। तो अगर इम्पॉसिबल हो गया तो वो खुद ब खुद इन्फोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बट सपोज इवेंट हैपन, अगर इवेंट हो गया तो क्या होगा, यहाँ नहीं दे रखा है, बट जनरली सिंपल एग्जांपल, इवेंट हैपन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। दो ही सिचुएशंस, दिस इज ना happening of that event become impossible and not before, उससे पहले नहीं, यानी कि what if event happen there will not be a valid contract. For example, illustrations करते हैं। For example, A agrees to pay B sum of money if a certain ship does not return. तो बोलते हैं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा अगर 1 मार्च को शिप नहीं आया, ठीक, या सिंपल शिप नहीं आया तो 1 मार्च छोड़ो क्योंकि नीचे एग्जांपल है वो सिंपल, उसने डेट फिक्स नहीं बोली, उसने सिंपल बोला इफ शिप डज नॉट अराइव, अगर वो शिप नहीं आया तो कोई समय नहीं है, कुछ नहीं है, इफ शिप डज नॉट अराइव व्हाट हैपन, सपोज शिप गॉट संक, शिप रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, न्यूज आ गई कि शिप डूब गया है, क्या वो वापस आएगा कभी? कमिंग ऑफ शिप बिकम व्हाट, इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स। और सपोज शिप डूबा नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ है रास्ते में, क्या होगा, वेट करेंगे और जिस दिन वो आ जाएगा, तो जब तक वो आएगा नहीं जब तक वो इन्फोर्सिबल होगा नहीं, ठीक है, और जिस दिन आ जाएगा वो वाइड हो जाएगा, है ना, बिकॉज नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, है ना। इसी को मैंने जो आपको पढ़ाया वो मैंने आपको बताया, टाइम इज नॉट फिक्स्ड, तो दिस इज द सिचुएशन वेयर टाइम इज नॉट फिक्स्ड ना। तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन जो है, दीज आर द सिचुएशन वेयर टाइम इज नॉट बीइंग फिक्स्ड, तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट है, नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड टाइम फिक्स नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिचुएशन 34, 34 की 35 पहले पढ़ेंगे, 35 इसकी लाइन में, फिर 34 करूंगा। वो एक इंडिविजुअल विल, इट डिपेंड अपॉन द एक्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो लेट अस रीड सेक्शन 35 बिकॉज इट इज इनटू द लाइन ऑफ दिस। सेक्शन 35 का दो पैराग्राफ है, पैरा 1 पहले पढ़ेंगे, पैरा 2 बाद में पढ़ेंगे। दिस इज when the contingent on happening of event is specified within time. So they are saying contract contingent upon event happening. तो बोलते हैं हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द हैपनिंग, टाइम इज फिक्स्ड फॉर हैपनिंग। क्या बोलते हैं, टाइम फिक्स कर दिया हैपनिंग के लिए कि इवेंट कब होगा, दैट टाइम इज बीइंग फिक्स्ड। क्या बोल रहे हैं, लेट मी रीड, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do anything, we know this, है ना। तो contingent contract to do or not to do anything, we know क्या है। If a specified uncertain event happens within a, if a specified uncertain event happened within a fixed time, तो uncertain event का मतलब बात कर रहे हैं collateral event, happened within a fixed time, एक समय सीमा दे बता दिए कि इतने के अंदर अंदर होगा, तब क्या होगा, becomes void if at the expiration of time fixed such event does not happen। तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है, if does not happen in fixed time, तो जो समय दिया था उसमें नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, it is void, it will turn into a void contract। Second, this is if happening of event became impossible, तो इवेंट की हैपनिंग इम्पॉसिबल हो गई बिफोर फिक्स पीरियड,
बिफोर फिक्स टाइम, समय से पहले। तो जो समय दिया था उस समय से पहले पहले इवेंट क्या हो गया, खराब हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। दिस इज व्हाट वाइट है ना, इट इज वाइट। थर्ड सिचुएशन मैंने खुद ही काम आउट कर लिया, खुद ही बना ली। इफ हैपेंड, इफ हैपेंड इन फिक्स्ड टाइम, तब क्या होगा, इट इज एनफोर्सेबल, है ना। ये तो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस यूज कर लिया हमने खुद ही। तो अगर टाइम फिक्स किया हुआ है तो ऑब्वियस बात है उस फिक्स समय के अंदर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उस समय के अंदर नहीं होगा या फिर उस समय का ड्यूरेशन में ही उसकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन रीड करते हैं, हमारे शिप वाली इलस्ट्रेशन है, इसमें टाइम फिक्स कर दिया है। इलस्ट्रेशन ए रीड करते हैं, by agreement to pay be a sum of money if certain ship return within a year. The contract may be enforced if the ship returns within the year and become void if the ship is burned within a year. हाँ यार, तो एक साल के अंदर जहाज वापस आया, if ship return, if ship arrives, सिंपल। तो अगर शिप 1 जून को अराइव करेगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो क्या है फर्स्ट कंडीशन, जैसे ही शिप 1 जून को अराइव करेगा मुझे पैसे देने पड़ेंगे, फर्स्ट। सेकेंडली, शिप अगर 1 जून को अराइव नहीं करता है, वो 2 जून को अराइव करेगा, मुझे पैसे देने की जरूरत है ना। या फिर हुआ क्या, शिप आया ही नहीं है और मुझे 1 जून से पहले पता चल गया कि शिप डूब गया है, तो हुआ क्या है, तो अब तो वो कभी आएगा ही नहीं, यानी कि अब इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। ठीक है, तो फिर ऑब्वियस इट इज व्हाट, ठीक है। तो फिक्स पीरियड के अंदर होना चाहिए, तो अगर उस फिक्स पीरियड में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इट विल बिकम वॉइड। पैरा 2 सेक्शन 35 का पैरा 2, this is they are talking about contingent contract, contingent contract depend upon collateral event, depend upon non-happening of collateral, ठीक है। तो वो डिपेंड अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट, एक कोलेटरल इवेंट नहीं होना चाहिए और टाइम इज फिक्स्ड। अब उल्टा बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विद इन पीरियड, तो दे आर सेइंग इफ दिस डज नॉट हैपन तो इट इज डिपेंड अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट आपसे तब करूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है। तो आज लॉकडाउन नहीं हुआ तो कल मैं आऊंगा, है ना। दिस इज नॉट हैपनिंग फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड फिक्स दे दिया, अगर ऐसी सिचुएशन तब क्या होगा। दिस इज contingent contract to do or not to do anything if the specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law. So time is fixed or does not happen, तो उस फिक्स पीरियड में नहीं हुआ तो ऑब्वियस इट इज एनफोर्सेबल, है ना। इट इज एनफोर्सेबल बिकॉज नॉन हैपनिंग ही तो इंपॉर्टेंट है, तो हमने बोला इतने ड्यूरेशन में नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो एनफोर्सेबल है। सेकंड, हैपनिंग बिकम इम्पॉसिबल, हैपनिंग बिकम इम्पॉसिबल, और उसका होना इम्पॉसिबल हो गया, है ना। उसकी हैपनिंग होना इम्पॉसिबल हो गई, इट इज ऑल्सो एनफोर्सेबल बिकॉज अब होगा ही नहीं, तो फिक्स उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर।
तो उस फिक्स पीरियड में उसकी हैपनिंग होना इम्पॉसिबल हो गया, नहीं होगा। और लास्ट हमने खुद ही निकाल लिया, इफ हैपन इन फिक्स पीरियड, हैपन इन फिक्स पीरियड, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये एनफोर्सेबल, तब ये एनफोर्सेबल। तो दीज आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली, है ना। तो सेक्शन 31, 32, 33 एंड 35 बेसिकली मिला के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट का फॉर्मूला जो मैंने आपको कराया था अभी, उसको अभी समझ आया प्लीज, मैंने वो ब्रेक डाउन कर दिया था, समझ आया, राइट। कल हम सेक्शन 34, 36 और वहीं से वी विल मूव इनटू द कंसेप्ट ऑफ contingent contracts, will directly move into concept of quasi contracts.